तमाम साथियों को या अली मदद. Thank you for joining us today. Inshallah, we'll start on this new Farman from Dubai, Baitul Khayal Mulaqat, January 23rd, 2018. Inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Mulai Mehrban, Ya Mulai Mehrban, Ya Mulai Mehrban, Madad Farma, Madad Farma, Ya Mulai Mehrban, Madad Farma, Ya Mulai Mehrban, Madad Farma, Madad Farma, Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Mulai Mehrban, Tawfiq, Tahid, Himmat wa Yari Mola, Ya Mola, Tawfiq, Tahid, Himmat wa Yari Mola, Ya Mola, तेरी मदद के बगैर हम एक भी कदम नहीं उठा सकते हैं मौला. या मौला मेहरबान, हमारे करीब आ जा मौला, हमारे और करीब आ जा मौला. अपना दस्त मुबारक हम गरीबों पर रख मौला, ताकि तेरी नूर की रोशनी में मौला हम कुछ देख सके, आगे बढ़ सके मौला. तेरे ही नूर की रोशनी में मौला कोई इल्मी काम हो सके. या मौला मेहरबान, रहम फरमा मौला, रहम फरमा. या मौला मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा. तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद. फरमान मुबारक. अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. My beloved spiritual children, first of all, this evening I give to each and every one of you individually and to your families and to your Jamaat my warmest, my best, best loving blessings. Khanavadan, Khanavadan, Khanavadan. Ameen. My beloved spiritual children, I hope you all know that entering into Baitul Khayal is a matter for each one of you individually, for your individual decision, and nobody should have put you under any form of pressure to say you should enter Baitul Khayal. So I hope that you are here through your own individual wish and not because your uncle or your daughter or anybody else has told you. You have to join. But you should be here through your own individual wish. Friends, my brother and sister online, we have talked about this many times before, that our individual decision, niyat, intention to enter into the Baitul Khayal plays a great role in our elevation, in our spiritual
happiness in our spiritual journey into the Betul Khayal. When and if we are ready, and when we go there in the huzur of the Imam Zaman, and if our niyat, intention is to receive the Betul Khayal bowl, and inshallah with Imam's help, mercy, we do perform the Betul Khayal ibadat, it will bring all the happiness that we wish to have. Not only that, but it would make our Imam happy, because now, after whatever years of waiting, you have given your attention to your soul, which is eternal, which matters. Entering into Betul Khayal is like saying, I am finally ready to do something which is permanent, which is necessary, which I will take with me. I have finally realized that all of the worldly matters that I have been running after were temporary, something that I will not take with me, but I will leave behind me. But today I'm ready to do something for my soul. And that is the niyat that we are speaking of, with that understanding why we want to enter into Betul Khayal. यहाँ पर हमारे उर्दू स्पीकिंग दोस्तों के लिए, जब हम तैयार हो जाते हैं ये कहते हुए कि हमें अपनी रूह के लिए कुछ करना है, इतने सालों तक हमने अपनी दुनिया और दुनिया और दुनिया के पीछे भागते रहे, आज हम तैयार हैं अपनी रूह के ऊपर तवज्जो देने के लिए। हम वो काम करना चाहते हैं जो दायमी है, परमानेंट है। हमारी रूह के लिए कुछ करना चाहते हैं और वो काम करना चाहते हैं जो हम अपने साथ ले जाएंगे, ना कि वो काम जो आज तक हम करते रहे और इसी दुनिया में छोड़ के जाना है। इसी दुनिया में हम वो सब कुछ जो भी कमाया है वो छोड़ के जाना है। आज हमने फैसला किया है कि या मौला, हम अपनी रूह के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी रूह की खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये देखकर इमाम हमसे खुश हो जाता है कि मेरे रूहानी बच्चों ने आज फाइनली अपनी रूह के ऊपर तवज्जो दी है। और ये इमाम की खुशी हमारी खुशी के लिए बहुत ही जरूरी है। यहां पर एक हदीस कुदसी जो आपके सामने यहां पर शायद नजर आ रही होगी आपको,
खुदावंद ताला इस हदीस कुदसी में, हदीस कुदसी क्या होती है? वो कलाम इलाही जो खुदावंद ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, मगर किसी वजह से वो कुरान के अंदर उसको जगह नहीं मिली। खुदावंद ताला फरमाते हैं कि कोई भी शख्स, कोई भी बंदा मोमिन मेरे करीब नहीं आ सकता है फर्ज की नमाज और फर्ज की चीजों से। यानी कि कोई भी मेरे करीब नहीं आ सकता है उन चीजों से जो उन पर फर्ज की गई है, क्योंकि जो फर्ज है वो तो कर्ज है, वो तो उनको करना ही है, मगर नवाफिल से। नवाफिल कहते हैं जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमाम के प्यार में दुआ, दसौन और मजालिस के ऊपर करते हैं, जिसके अंदर इबादत का एक बड़ा हिस्सा है, चूंकि वो कंपलसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, फर्ज नहीं है। तो क्या फरमाया कि कोई भी शख्स मेरे करीब नहीं आ सकता है फर्ज को निभाते निभाते, मगर वो जो नवाफिल के जरिए से मेरे करीब आ जाता है। यानी कि आप ऐसा एक काम करें जो आप पर फर्ज नहीं है। जिस तरह से अगर हम तीन चीजों को लेते हैं, दुआ से नहीं, इबादत से, दसौन से नहीं, चैरिटी से, चांदरात की मजलिस फर्ज है, दूसरी कुर्बानियों से आप इमाम के करीब आ सकते हैं, क्योंकि वो आप अपने दिल से करते हैं, फर्ज नहीं है, वो जरूरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है वो। सो हदीस कुदसी कॉल हदीस नवाफिल, there is nothing by which my servant draws close to me than that which I have imposed upon him, but my servant draw close to me by extraordinary act of nawafil, because this was not compulsory. You on your own, with your own will, intention to do something for your soul, you went to the Imam, Ya Mullah, I want to do something for the salvation of my soul. That is the extraordinary, not what is for us, compulsory, required of you. And that's how you get close to the Imam Zaman. What is for us, compulsory, required, must be done. But what is given on top of that, with the love for the Imam, the love for your soul, and the love for the Akhirat, will be accepted and will cause a soul to come closer and closer and closer to the nur of the Imam. That is the hadith. It's called Hadith Nawafil, and it is the Hadith Qudsi. Inshallah, you know what that means. The second thing Mullah says, I want to say to my spiritual children is that in our faith there are matters which are compulsory, such as prayers
and there are matters which are voluntary, and this is voluntary. So I assume you are here because you wish to devote extra time, extra thought, extra commitment to our faith. We see that Imam is talking about Nawafil. Imam is talking about your extraordinary gift, commitment to the Imam Zaman, to your faith. That is exactly what Hadith Nawafil is. So I assume that is correct. And I don't want people in front of me this evening being put under pressure. There is no pressure. So I am assuming that you are here because of your choice, because of your choice. मौला हदीस नवाफिल को आसान जबान में हमारे लिए यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं कि मुझे उम्मीद है, मौला फरमाते हैं कि आप यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आप अपना वक्त अपने रूह के लिए, अपनी आखिरत के लिए देना चाहते हैं। आप इसलिए इधर आए हैं कि आप कहते हैं कि मुझे कुछ और करना है, ज्यादा करना है, ना कि जो मेरे पर फर्ज किया गया है, क्योंकि ये काम जो है वो फर्ज नहीं है, ये वॉलंटरली है। यानी कि आपकी नीयत है तो आप करें, आपकी ख्वाहिश है तो आप करें, आप अपनी रूह के लिए कुछ करना चाहते हैं तो करें, वरना दुनिया के लिए सब काम आपके लिए मुहैया कर दिया गया है। बेतुल ख्याल में दुनिया का कोई फायदा नहीं है, आपकी रूह का फायदा है। और यही हदीस नवाफिल है। बोला यहाँ पर आसान अल्फाजों में हमारे लिए हदीस नवाफिल की एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग, तावीलात फरमा रहे हैं। So Mola says, I'm assuming that you are here because of your choice. आप यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये काम आप खुद करना चाहते हैं। Further, Mola says, entering into Baitul Khiyal is an important commitment in the sense that it is an individual commitment to seek spiritual enlightenment. बैतुल ख्याल में दाखिल होना यानी कि एक बहुत ही खास काम आप करने जा रहे हैं, और वो क्या है? अपनी रूह की तरक्की, अपनी रूह के इनलाइटमेंट के लिए, अपनी रूह की रोशनी के लिए आप ये काम करने जा रहे हैं। And it is each one of you individually who makes that decision. और एज अ ग्रुप ये काम नहीं है, ये इनफरादी तौर पर आपको करना है। इबादत इज वेरी वेरी पर्सनल and individual, and you must commit to this individually and personally, each one of us individually, because it is for our own soul. It is each one of you individually who will sit in bandagi and seek that light. So I want my spiritual children to understand that this concerns each one of you individually.
It concerns you individually and personally because you are doing this for your individual, your own soul. Very individual act, and therefore this must be done in such a way where we understand that I am doing this for my own soul, the salvation of my soul, enlightenment of my soul. ये इतना जाती मामला है कि हम को इस बात पर बहुत ही तवज्जो देनी चाहिए कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इनफिरादी है, मेरी रूह के लिए है, मेरी रूह की निजात के लिए है, मेरी रूह की खुशी के लिए है, मेरी रूह की तरक्की के लिए है। यानी कि ये आपका जाती मामला है, ना कि किसी और का। So I want my spiritual children to understand that this concern each one of you. मौला फरमाते हैं कि आपको जानना चाहिए कि इस इबादत का, इस इसमें आजम का, इस बोल का, बैतुल ख्याल का ताल्लुक आपसे इंडिविजुअली है, हर एक से। इट डज नॉट कंसर्न योर फैमिली और योर जमात और अदर्स। आपकी इबादत का ताल्लुक आपकी फैमिली से भी नहीं है, आपकी जमात से भी नहीं है, दूसरों से भी नहीं है, वो आप और आपकी रूह के दरमियान में है। इट कंसर्न्स ओनली यू, इट कंसर्न्स ओनली यू, सिर्फ आपके लिए है। सो आई होप दैट माय मुरीद who are here because it is your wish to be here. Is that correct? Good. मतलब पूछते हैं कि आप यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी ये ख्वाहिश है, आपकी ये नियत है। क्या ये बात दुरुस्त है? शायद जमात ने हाँ में सर हिलाया होगा। मौलाना फरमाया बहुत अच्छा। ओके, the third point I would make to my spiritual children is that when you sit, you have to understand that you are seeking light, and you are seeking to be touched in a spiritual manner. It has nothing to do with world around you. ये नुक्ता हमने काफी मर्तबा कवर किया है, लेकिन बहुत ही दिल पजीर नुक्ता है कि मौला फरमाते हैं कि तीसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब आप बैठे इबादत में तो याद रखना, इस बात को आप समझ लें अच्छी तरह से कि आप क्या चीज को ढूंढ रहे हैं, क्या चीज है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, क्या चीज है जो आपके अंदर होगी जिसको आप खोलकर उसको पा लेंगे, किस चीज को पाने के लिए आप इबादत में बैठ रहे हैं, और वो है नूर, वो रूहानी खुशी जो आपको छुएंगी। आप उसको ढूंढ रहे हैं, किसी दुनिया की चीज को नहीं। This point we have covered many times, but it is so good to understand, and it brings happiness to our soul and mind that it is okay if we are repeating this again and again. And that is
When you sit in ibadat, remember, you are seeking something in yourself, in your personal world, in your Baitul Khayal, which Imam has given to you, is not outside, but it is inside of you. He has already have given to you. You just have to seek that. You have to open that, and you have to see that. You have to feel that. It will touch your heart and mind. It will bring you that happiness. And remember, it has nothing to do with world around you. Nothing. And therefore, the first principle is, when you sit, eliminate from your mind as much as you can anything that has to do with worldly matters around you, and concentrate on the bowl that I will give you. This is not easy, and therefore I said to my spiritual children, I do not expect you always to succeed, but I expect you to try. That is the difference. Look at how easily, with so much love, if you can imagine with your eyes closed, Imam is standing in front of you like father and a mother to a child. बेटा याद करजे, याद રાખજે કે આ બોલ જ્યારે તું પડવાનો, જ્યારે તું ઇબાદતમાં બેસવાનો, તો આરામથી બેસજે. યાદ રાખજે કે જે ચીજ તું ગોતી રહ્યો છો એ તારા જ અંદર છે. એ ખુશી જેની તને તલાશ છે એ તારા જ અંદર છે. બહારનો વિચાર મૂકી દેજે. આ દુનિયાનો મામલો નથી. આ રૂહ અને નૂરનો મામલો છે. યાદ રાખજે કે જ્યારે તું આ ઇબાદતમાં બેસીસ તો તને પૂરી કોશિશ કરવી છે કે દુનિયાના બધી ચીજોને 1 મિનિટ માટે, થોડી વાર માટે ભૂલી જા. શું કામે કે આ દુનિયાનો મામલો નથી, આ તારી રૂહ અને નૂરનો મામલો છે. Can you imagine? Imam is talking to you in such a loving, motherly, fatherly way. If you can imagine that and keep remembering that, that itself will bring happiness in you. It will bring tears into your eyes. Look at how loving this Farman is. Look at the way Imam is coaching you, teaching you, touching your heart with the love and understanding. What is understanding? Mullah said, remember, there may be days that you will feel good, successful. There may be days when you will not feel that way. But I expect you to try. And that is the difference. It's not a worldly business where you invest money and you make some money. No, it's not like that. There will be good nights and good days. There would be some mediocre days and mediocre nights. There will be nights that you will feel happiness. There will be the night that you will concentrate more than before. Each night will be individual.
And that is the difference between ibadat and worldly matters. In worldly matter, there are expectation, must be. In ibadat, that is not. There is no must be. It is not our, but it is given to us. That is the difference. But I expect you to try. In order to be successful, you want to set aside worldly matters. This is time that you give to your soul. And each one of you has a soul. And each one of you has a soul which is eternal. And therefore, I say to my spiritual children, this is a time when you concentrate on your soul, not on worldly matters. मौला फरमाते हैं कि याद रखें कि यही फर्क है इबादत में और दुनिया के कामों में। यहाँ पर आपको जो सक्सेस मिलने वाली है वो उस वक्त मिल सकती है जब आप दुनिया के विचारों को 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए एक तरफ छोड़ देते हैं और अपनी रूह के लिए और अपनी रूह की तरफ तवज्जो देनी है जो कि दायमी है, जो हमेशा रहने वाली है। यानी कि उस चीज पर आपको तवज्जो देनी है जो हमेशा के लिए है, ना कि वो चीजें जो टेम्पररी है, जिसको आपको यहाँ पर छोड़ के चले जाना है। ये दुनियावी मामला नहीं है, ये रूह का मामला है और रूह दायमी है और उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है। If you are, as inshallah, you will be successful. If you are paying attention to your soul, the soul which is eternal, then inshallah you will be successful. You will know it. So I want you to be certain that you will know it. You will not have doubt in your minds. अगर आप ऐसा करते हैं और आप अगर इस बात को समझ गए हैं कि ये रूह का मामला है ना कि दुनिया का, तो मौला फरमाते हैं कि इंशाल्लाह आप जरूर जरूर कामयाब होगे। और जब आप कामयाब होगे तो उसमें कोई भी शक और शुबे की जगह नहीं होगी। But as I have said earlier, do not communicate about this spiritual matter because those who have not experienced it will not understand it. And remember that if you try to say what you have achieved, and those who do not have this experience will never be able to understand. That is your personal to keep. Remember that. याद रखना कि जब आप इसके अंदर कामयाब हो जाए तो आपको उसको अपने पास रखना है, क्योंकि अगर आप इसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज का कोई तजर्बा नहीं किया है। And there is no reason for you to share. और कोई वजह भी नहीं है ये शेयर करने की। क्यों आप किसी के साथ इस चीज को शेयर करेंगे? On the contrary, this is for you, for each one of you individually, one by one, by one, by one, by one. बल्कि आपको समझ लेना चाहिए
कि ये आपका जाती मामला है, हर एक के लिए, हर एक के लिए, हर एक के लिए मौला फरमाते हैं। इट इज नॉट फॉर द होल जमात, ये पूरी जमात का मामला नहीं है, ये आप और आपके इमाम के दरमियान का मामला है, वन बाय वन, not for the entire Jamaat. You are here and I am saying, as your Imam, enter into Baitul Khiyal. When I read this line, it reminds me of a ayat in the Quran. The angel says to righteous, Salam, enter into the paradise and stay here forever. Whatever your wish are will be granted. Stay here forever. Enter into Bethul Khiyal. This is Bethul Khiyal, your personal world, your personal thought, your personal space where you, meaning your soul, Imam's Noor, can connect. And that is the world where you will find anything and everything that you wish, and even those things you do not even know to wish, you will find it. There's another ayat regarding that. That I have won and collected all there is in the heaven and the earth for you. He had kept it in the Noor in your personal world. Everything is on in the earth and the heaven. He have won and kept it for you. So enter into Bethul Khiyal and take it, find it, have it. It is all yours. It is all yours. Inshallah, each one of us will have that spiritual experience where you will see what I just said. You think you are a small being when the entire universe, everything in the heaven and the earth, has been encompassed in you by the Imam Zaman, in that bowl, in that blessing, in that Noor which Imam just gave to you. So enter into Bethel Khiyal. Imam is inviting you. Come on in. Salam, have salamati on you. May the peace be upon you. Come inside, come into Bethel Khiyal. Imam has both of his arms open, he's welcoming you. He wants you to come in. You see how loving this image is. If Imam and his Noor is in you, and Imam is Wakulle Sha'een, what will you not have? Imagine that. If Imam and his Noor is in you, and Imam himself is Wakulle Sha'een, then what will you not have? अपने विचार करिए, थिंक करें, आप सोचे इस बारे में कि अगर इमाम ने आपको अपना नूर इनायत कर दिया है, इमाम और उसका नूर आपके अंदर है, और इमाम के अंदर हर चीज समोई हुई है,
तो फिर आपके अंदर क्या चीज नहीं होगी? कोई ऐसी चीज होगी जमीन और आसमान में जो आपके पास नहीं होगी, आपके अंदर नहीं होगी? एक मिनट के लिए सोचे आप। यहां पर ये समझ इमाम दे रहे हैं हमें। इमाम इज टीचिंग अस, ही इज शोइंग अस, he is coaching us, guiding us, he is telling us, he is teaching us like a 6-year-old child. मेरे बेटे आ जाओ, मेरी बच्ची आ जाओ, आ जाओ बैतुल ख्याल में। Let me show you the world. Let me show you the universe. Let me show you the heaven today. Let me show you the heaven today. That is entering into the Bethel Khayal. I don't know if I can make this more clear. मुझे नहीं लगता है कि मैं कौन से और अल्फाज को यूज कर रहा हूं इससे ज्यादा वाजे तौर पर। वो बातें आप समझ रहे हैं आज जो शायद पहले कभी नहीं सुनी और ना ही समझी। इससे ज्यादा नाचीज व गरीब आपको वाजे तौर पर नहीं बता सकता और नहीं समझा सकता। मुझे उम्मीद है कि आपने इस बात पर तवज्जो दी होगी। Let me read the last 2 lines and then we will stop here for the comments or questions. Mullah says, I give you my best, special blessing for success, for enlightenment of your souls, for spiritual happiness, and for the success in बंदगी। आमीन या रब्बल आलमीन। मौला फरमाते हैं, मैं आपको खास खास दुआ आशीष फरमाता हूं आपकी रूह की रोशनी के लिए, आपकी रूह की खुशी के लिए, आपकी रूह की तरक्की के लिए और इबादत में कामयाबी के लिए। आमीन या मौला। बहुत नवाजिश। Thank you everyone for listening and joining. I hope you will not forget today's session. I would encourage you to re-listen to this because this can, it could, and inshallah it would bring you greater understanding and happiness. Ameen. Ji. Ji sir, subhanallah sir, subhanallah. Sir, you explained very well and very clearly, sir. Friends, please share your questions in the chat, or you can unmute your device or use the hand raise feature to ask the questions. All right, sir. Okay. Ji, Shiraz bhai, please go ahead and unmute your device. Yes, I have. Yeah. Can you hear me? Ji. Ji sir. Yeah. Okay. I have a question from last session. You said the first light, which is the first nur, and somewhere in the Farman, Imam is also saying special light. Is it the same? Ji. Let me explain that. When Imam says special light, he means Nurani light, Nurani Didar, not the light in the way that we think in our worldly matter, like this light outside or this light of the bulb. No, this light is different light than this light. That light is special, customized.
particularly made for you and you only. That is the reason when you try to share that with others, they don't understand. Because this light is very, very, very special, customized, unique for you. Because this light can come from your eyes, your ears, your touch, your taste, or your smell. And there can be others, but those are the 5 elements that we can understand with. Now, when Nachiz and Garib talks about the first light, that shows the steps of the spiritual elevation. The light does not come lump sum. It's not that today we have nothing and tomorrow we have everything. It does not work like that. It comes in stages. The first light, the second light, the third light, the smaller light, like a spark, a little bit bigger, a little bit better, more experience, spiritual experiences, more Nurani experiences, on and on and on. And inshallah, one day we are immersed in the ocean of the Nur. So the spark, first light, more and more and more and more, inshallah, it's a journey. It does not happen lump sum. अगर किसी को उर्दू में पूछना है कि मैंने अभी क्या कहा तो आप पूछ ले, अगर समझ में नहीं आया है तो जी. So just to clarify slightly, you mentioned in your previous lectures that the first light is very bright and colorful. Is that also customized to every individual? Absolutely. Yes. So let me explain that part. So the first light can be of 2 kinds. Just a light and that's it. First light on the first heaven, meaning first stage crossed. Did you just understand what I'm saying? Let me repeat. Yes. First light can be a spark on and off, or first light at the top of the first heaven, first stage. If you have crossed the first stage, those lights will be very colorful, amazing, never forgetting light. When you will see that, you wanted to stay there, you do not want it to come back. It will be so amazing. So you see the difference between these two? Spark, light. G. My other question was that somewhere in your previous recordings, I heard that when you get a loud bang, your soul comes out. So let's say someone has attained that stage. So on the journey of soul, is he below 3 or above 3? I would not know that. That is a hard question for me to answer. That is really hard for me to answer. Thank you, Shirazba. Okay, thank you. सर फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर इसी को आप उर्दू में भी बता. जी, तो 2 सवालात यहाँ पर वो थे. एक कि जो रोशनी का मामला था, तो नाचीज ने 2 अलग-अलग बयानात दिए कि रोशनी के जो तजर्बे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उस रोशनी की बात करता हूं जो आंखों से देखी जाती है. वो 2 किस्म के हैं. एक रोशनी होती है और बस खत्म.
एक लम्हे के लिए एक चिंगारी की तरह रोशनी आती है, लाइट ऑन होती है और बंद हो जाती है, बस खत्म। लेकिन अगर हमने एक स्टेज को क्रॉस कर लिया है, एक मरहले को पार कर लिया है, तो उस मकाम पर बहुत सारी रोशनियां और बहुत ज्यादा रंग बरंगीन रोशनियां नजर आती है और वो रोशनियों में हम खो जाते हैं। हमें दोबारा से वापस आने का दिल नहीं चाहता। जब आप इबादत में से उठेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि दोबारा से इबादत में बैठ जाए। आपका दिल चाहेगा कि मुखी साहब खाना उदान बोलकर बत्तियां ऑन ना कर दे। आप चाहेंगे कि वो 1 घंटा बढ़ जाए, वक्त खत्म ना हो, वक्त ठहर जाए, आपका ये दिल चाहेगा। और वो रोशनी बहुत ज्यादा रंग बरंगी होगी। वो पहले स्टेज को, पहले मरहले को क्रॉस करने पर आती है, जबकि छोटी स्पार्क, छोटी लाइट, एक लम्हे की लाइट वो पहले आती है। यानी कि 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आपके अंदर लाइट का तजर्बा होता है और फिर वो खत्म हो जाती है। और वो रंगीन लाइट नहीं होती है, कलर नहीं होता है उसके अंदर, कोई रंग नहीं होता है, यानी कि वो फीकी लाइट होती है, रंग बिगर की लाइट होती है। तो ये दो अलग अलग लाइट की बात हुई जी। जी सर, subhanallah. Sir, we don't have any questions in the chat. Friends, you can unmute your device if you have any questions. Yali Madad, sir. याली मदद। In one of the Farmans, Hazri Imam has said, have courage. Can you elaborate? I mean, not have courage, but I think he says you need courage to sit Right. in. Would you please elaborate on that? Thank you. Thank you, Narmeen. Absolutely. So, we lose hope so fast. If something does not happen to us quickly in the time frame that we have set in our mind, we lose faith, we lose hope. And that is the human nature. So Imam is saying, no, have a courage. Have a courage to sit for as long as it takes to sit. Number one. Number two, you can defeat your thoughts and you can defeat your sleep if you have a courage to do so. Because getting up in the morning requires that courage, requires that courage to fight your sleep. It does take courage, a lot of courage. So two-way, number one, have courage, be strong in yourself, and you can defeat your thoughts in ibadat, your sleep, and second, have a courage that it could take longer than you have set your mind to. Because human nature, we like to put our things in a timely manner, that I'm going to try for 1 hour, I'm going to try for 1 week, I'm going to try for 1 month. No, have a courage. Try and keep trying and keep trying until it happens. Because it could happen the very next day. If you thought that today, if it doesn't happen, I'm done, what about if there was the next night
What about it was today and tomorrow that it would have happened, and you lost your courage and you lost that opportunity to have a courage. G. Um, any other friends have questions? You can unmute your device or use the hand raise feature. Right, so it looks like there are no questions or comments. Yali Madad sir. Ya Ali Madad. Sir, I always have this question about when Hazri Imam always mention in his Baitul Khal Farman that uh, I want you to carry this light also during the daytime, like also throughout your day. So, sir, when we are talking about this light, that we are sitting in the ibadat and there are stages that we go through. So that light's effect can also be gained during our daytime too. It will stay with us during our daytime in different manners. Maybe I can, I'm reading something and I will get some kind of understanding through it. That will be like an effect of that light too, right, sir? If you can explain a little bit more in that, please. Actually, right now, at this moment, right now, because of that light, we are reading this Farman. Without that light, we will not be able to read this Farman. Right now, we are carrying the light with us to understand this Farman. Without that light, we will not be able to understand this Farman. Now, that was the example I just gave you. So let's come into your question. Because light to us is this light outside. This light is the enlightenment, understanding, happiness, courage, and all of the above. Imam is saying when you have this light, you will carry this with you all day, entire life, for your entire life. Because that light that Imam is speaking of, the enlightenment, will coach you, will help you. When you make a decision, the light will coach you and help you. When you read something, the light will shed its enlightenment on it, meaning you will be able to understand it. When you do something, or if you are doing something which you are not supposed to be doing, that light will help you, coach you, and stop you from those things. If I dare say this, that the light will be your personal angel. He will guide you, he will talk to you, he will coach you, he will help you understand things that we did not understand before. When we make decision, you will have a friend in the form of an angel, that light that will stay with you in that decision making process. That's what it means, inshallah. Thank you, sir. Shukr, alhamdulillah. Any other friends have any questions? All right. If there are no more questions, we can stop here. Okay, Thank you, so I think everyone. somebody asked in the chat, रात की बंदगी दिन को काम आए.
So what does it mean? ये शायद कलाम मौला के अंदर है, दिन की इबादत रात को काम आए और रात की इबादत दिन को. इन द डे टाइम, दिन के वक्त जो आप तस्बीहात करते हैं, और इबादत का मतलब बैठकर आंखें बंद करके इबादत नहीं है. इबादत का मतलब है इत्तेहाद करना, फॉलो करना, अपने आप को सबमिट करना. जो दिन में आपने अच्छे अमाल किए हैं, तस्बीहात पढ़ी है, इसमें आजम को याद किया है, अच्छे काम किए हैं, वो आपको रात को काम आएंगे. और रात की इबादत आपको दिन में अच्छे काम करने में, तस्बीहात करने में, और ज्यादा इसमें आजम को याद करने में मदद करेंगे. इन अदर वर्ड, 24 घंटे की इबादत होनी चाहिए. इबादत 1 घंटे की नहीं होती है, इबादत 24 घंटे की होती है. ये यहाँ पर समझाया जा रहा है. मेरे ख्याल में ये कलाम मौला से लिया गया है. यानी मदद सर, जाली मदद. सर एक क्वेश्चन था. मौला अली का फरमान है, जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना. इसको थोड़ा सा प्लीज एलिब्रेट करेंगे ना सर. मैं आपके इस को मुकम्मल कर दूं. जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना. जिसने अपने आप को ज्यादा पहचाना उसने अपने रब को ज्यादा पहचाना. ये मुकम्मल कलाम है. अपनी रूह को पहचानना, अपने रब को पहचानना, अपनी रूह को ज्यादा पहचानना, अपने रब को ज्यादा पहचानना. मैं आपको सिर्फ 2 अल्फाज में इस बात को समझा सकता हूं. आपकी रूह और इमाम की रूह एक ही है. आपकी रूह इमाम की रूह से आई है. आप समझ गए 2 अल्फाजों में? यस सर. जी. तो फिर इसी फरमान में मौला हमसे सवाल करते हैं कि खालक कौन से ना मखलूक कौन से, तो वो भी एक ही हो जाती है चीज. जी, यही तो मौला हमको समझा रहे हैं. देखिए मौला अली का एक और मैं आपको बयान कर दूं. आप अपने आप को एक छोटा जरा समझते हैं, जबकि आपके अंदर पूरी कायनात समोई हुई है. हम इमाम को कहते हैं वकुल शहीन. मौला आपको बोल रहा है कि आप वकुल शहीन है. आप अपनी रूह को पहचाने तो आप अपने मौला को पहचानेंगे. जी. सर तो फिर इसी फरमान में 160 के फरमान में मौला हमको बार बार यही सवाल पूछते कि आप तुम सोचो कि फना हो जाए, जो कोई चाहे वो कोशिश करे वो वहां पहुंच सकता है, लेकिन तुम्हारे गुनाह तुम्हें वहां पहुंचने नहीं देते. फिर मौला बोलते कि तुम ख्याल क्यों नहीं करते कि मैं खुदा में एक हो जाऊं. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन मौला हमको वो ही बता रहे कि हम और आप एक है. बेशक, एब्सोल्युटली. हमारे गुनाह पता है ये क्या है? मेरे ख्याल में इस फरमान को अभी तक बहुत सारे लोग नहीं समझे हैं, और फरमान को समझना भी मुश्किल है. ये तो हम सब जानते ही है. ये वो गुनाह नहीं है जो हम सोचते हैं कि मैंने किसी को तकलीफ दे दी, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया. सबसे बड़ा गुनाह ये है कि हम अपने आप को इमाम से अलग समझते हैं. हम अपने आप को खुदा से अलग समझते हैं. हम अपने आप को इमाम से दूर समझते हैं. हम समझते हैं कि इमाम की रूह और कोई है और कहीं है, और मेरी रूह और मैं कहीं और हूं. जबकि हमारी रूह इमाम की रूह से जुड़ी हुई है. इस तरह से जुड़ी हुई है. मौलाना रूमी फरमाते हैं, मैं कब आया इस दुनिया में, ये तो मेरी रूह
यानी कि इमाम की रूह का साया है। मैं कब आया था इस दुनिया में? जी सर आप एक दफा ये फरमान समझाएंगे हमको प्लीज? आप मेरे को पूरा फरमान भेज दें और नाचीज इंशाल्लाह इस फरमान को फिनिश करके उस फरमान पे जाएंगे। 160 फरमान है ना कलाम मौला ये क्या रूहानी रोशनी के रूहानी रोशनी का फरमान नंबर क्या है? 160 ये कलाम इमाम मुबिन का 160 फरमान है। ठीक है, डन। शुक्र मौला, थैंक यू सर, थैंक यू। सर फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसी को आप इंग्लिश में दे दें। Yes, so my sister was asking regarding the Farman and which she has requested, and inshallah after we finish this Baitul Gal Farman in a day or two, we will go to this Farman, and it is available in English and Urdu, Kalam Imam Mubin, Farman number 160, where Imam talks about that you should think about Fanafi Allah. You should think about who you are and who is your creator is. And then she quoted the Mullah Ali's Kalam that whoever know his soul knows his Rabb. Whomever know his soul more knows his Rabb even more. And then another Kalam that you think you are a particle when the entire universe is encompassed in you. How entire universe is encompassing us? Because Imam's Nur and Imam's Ruh, soul, is in us. And Imam himself is Kullu Sha'in. If Imam is in us, then what is there not in us? So that was the gist of what I told her in Urdu. Inshallah, with this Farman, we will learn about how and where. It's a beautiful Farman of Imam Aka Sultan Muhammad Shah, Salawatullah alayhi, may our soul be sacrificed to the Imam. Ji. Okay, sir, don't have any questions anywhere. Any friends, please, any friends have any questions? You can unmute your device. All right, Kamra Sahib. If not, we can stop here. Ji, sir. I think somebody has a question. Ji, Jamil bhai, please go ahead, unmute your device. Ji, Mr. Jamil. Okay, I think he's saying it's not related to today's topic. If you would like to ask, go ahead and ask. If I can answer, I'll answer. If I can't, I will tell you. All right, looks like. All right, looks like he cannot unmute or he don't want to unmute. Let's stop here. Thank you everyone for joining. Yali Madad, Yali Madad. Yali Madad, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Yali Madad, Yali Madad, Madad, thank you. Yali Yali Madad, Madad, sir. Yali Shukr, Madad, alhamdulillah. Yali Madad, Madad, sir. Yali Yali Madad, Madad, Shukar Ali Allah. Thank you so much. Yali Thank you, Madad. sir. Yali Madad.